Hey all, so we have a question today which is jump game. Just to give you a clarification about this question. So basically we have given given an array of integers. Now for each index in the array we have to find the maximum value which is present in the array itself. Okay, but but for finding the value, the maximum value for each index, for finding the maximum value for each index, there are some rules that has to be followed. So suppose for finding the maximum value for 5, we can move in two directions, either right, either left. Okay. But if we move right, we have to make sure that we are jumping to the smaller element, because the rule says if we move right, the right element should be smaller than our current element. So if our current element is 5 and we are moving right side, then we can only choose an element which is smaller than 5. Whatever element which is smaller than 5 in this particular section can be chosen. Okay. Similarly, if we move left, we have to make sure that whatever elements which are in the left hand side should be larger. Ultimately, we have to find the largest value for each index, and all the larger values that exist and can be reached should be on the left hand side. As simple as that. If any larger element exists on the left hand side of the index, that particular index can be reached to that larger element, means the value for that particular index would be the largest number which is on the left hand side. This part clear? So to reaching out to the larger value, we can either move right or either move left. For moving right, we have to make sure the right element should be smaller, and to moving left, we have to make sure that the left element should be bigger. So suppose if we take an example 231. Okay, so for 231 we can move to 2, like we can move to 3. Can we? No, we cannot. Why we cannot? Because this element is itself a bigger element than our current index, so we cannot directly move to 3. Clear? So how are we going to find the larger element for this 2? The rule says we can move right to the smaller element. So what we did, we moved to 1. There was one smaller element than me on the right hand side, which was 1. I moved to 1, and by reaching 1, I tried looking for the larger element which was at my left hand side. So if the smaller element exists on the right hand side, it means that I can go to that smaller element. Now after reaching that smaller element, I can iterate to left part, either any element which is larger than my current element exists or not. If exist, that is the answer. If does not, we don't have the answer, so we'll update the same element. This part clear? If if any doubt comes up, please try to put in the comment box. I'll go through it and try to answer as much as I can. See, even I am learning in this phase, right? So uh, I don't think whether I am making sense to you guys or not, but this is the way I am trying to give my best to you guys. Okay, so coming back here, we know that for each element we have to find the maximum element, and to finding the maximum element we have some operations. We can move right, we can move left,
and for moving right we have to find the smaller element on the right side, and for moving left we have to find the larger element on the left hand side. And if there any larger element exist on the left hand side, we can take that as our answer for that correct current index. So the very easy peasy way, I would say, uh, what we will do, we the main goal is we have to find very firstly that whatever the maximum indexes are present for each element on the left hand side. So what we do, we created pre-max array. Okay, we created pre-max array. Now in this array, currently 5 is the maximum element, so we updated 5. Now in 5 and 2, 5 is the maximum element, so updated 5. Now in 5 and 4, 5 is the maximum element, we updated 5. Now for 5 and 1, 5 is the maximum element, so updated 5. Now for 5 and 6, 6 is the maximum element, so we updated 6. So this is the pre-max array for this particular element. So suppose for 5 we want to check what is the larger element on the left hand side. It is 5 only. For 2 it is 5 only. For 4 it is 5 only. For 1 it is 5 only. For 6 it is 6. Okay, so by using this particular array we can find whether any bigger element exists on the left hand side or not for each indexes. Now reaching to this index, like reaching to this left hand side larger index, we have to find the smaller element first on the right hand side, then only we can move to the left. Correct? I understand that the rule says we can directly jump to the left hand side if any bigger element exists, but if we uh, apply this logic directly, that if any smaller element exists on the left hand side, jump directly, this will fail in some scenarios. I already showed you one example which was 2, 3 and 1. So if I want to go to 3, I want to find a larger element for R2. We cannot move directly go to 3, right? Because this is a larger element and it has to be smaller, then only we can move to right. So what we did, we moved to 1 and then we moved to 3. Ultimately 2 reached 3. So the larger element for 2 exists in the array is 3. So we put 3 in the answer. Simple. Here also we are doing the same thing. We have created a max element. Now what we will do, we will iterate from the n minus 1 part. So suppose this is my I. We'll iterate from this part and we'll take min. Why we are taking min? We are taking min because we are finding paths to reach our maximum index. Simple. If any min exists on the right hand side, it means we can go directly to that smaller element and then we will find the larger element. Simple. So let's iterate. Let's dry run. We are at 6, right? So let's say we have I, then we have nums I, then we have premax I, then we have min,
before check answer min update. Okay, indexes are 0, 1, 2, 3, 4. So I is equals to 4. Num size is equals to 6. Premax is equals to 5. Have I created the premax? Yes, here is the premax. Okay, so this is the premax array. Now premax 0, 1, 2, 3, 4. Now at fourth index, premax size equals to 6. Minimum before is infinity. So for very firstly we'll put minimum as infinity because we have to find the smaller element, right? So for finding the smaller element, initially we keep our variable with infinity. Then we compare whatever the smaller, just put it likewise. Okay. Now what we have to check? We have to check whether our premax is smaller than our min. Whether our premax is smaller than our min. Premax is 6, min is infinity. तो हम यहाँ पे चेक क्या करते हैं? वी चेक either our premax of I is greater than our min or not. Min is nothing but the minimum element from right hand side, from this side. Okay, we take it on the compilation time only. We are not creating any array. We just move. When we iterate from this part, we are just making min on the compilation time itself. So why are we checking this? Why are we checking this part? ये पार्ट हम बस इसीलिए चेक कर रहे हैं, सिंपल है, सिंपल है। ये पार्ट बस हम इसीलिए चेक कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं बेसिकली कि क्या लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बिगर होगा और राइट हैंड साइड में स्मॉलर होगा, तो हमारा min जो है दैट शुड बी स्मॉलर देन आवर लार्जर एलिमेंट। इफ दैट इज नॉट, इट मीन्स कि जो ये एलिमेंट है ये इटसेल्फ ही बड़ा एलिमेंट है। अगर हमारे इस साइड में कोई भी बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर हमारे लेफ्ट साइड में कोई भी बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है और हमारा min जो है यहां से शुरू हुआ और min जो है 6 है, तो इसका मतलब यही है राइट कि इस 6 के लिए कोई बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, करेक्ट। सो इन दिस केस हम क्या करेंगे? हम सिंपल जो हमारा प्री मैक्स आई है उसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर प्री मैक्स आई को नहीं भी अपडेट करना चाहे तो हम यहाँ पे सिंपल एरे ऑफ आई को भी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। बट फॉर द सेफ पर्पस हम प्री मैक्स आई को इंसर्ट करते हैं, क्योंकि प्री मैक्स आई इज ऑलरेडी स्टोरिंग द मैक्सिमम वैल्यूज फॉर ईच इंडेक्स, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे ये स्टोर कर देते हैं।
अगर बड़ा होता है प्री मैक्स, अगर बड़ा नहीं होता है प्री मैक्स तो ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हम चेक क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा 6 बड़ा है हमारे मिन से। मिन हमारा क्या है, इन्फिनिटी। तो हमारा 6 बड़ा नहीं है हमारे इन्फिनिटी से। तो अगर हमारा 6 हमारे इन्फिनिटी से बड़ा नहीं है तो हम सीधा सीधा प्री मैक्स की वैल्यू डाल देते हैं जो कि है 6, और उसके बाद हम अपना मिन अपडेट करेंगे। मिन कैसे अपडेट करेंगे, सिंपल है। मिन इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन एरे ऑफ आई कॉमा मिन। अगर हम इधर से चल रहे हैं तो अगर हमारा एरे ऑफ आई छोटा है तो एरे ऑफ आई को अपडेट करो, अगर हमारा मिन छोटा है तो मिन को मिन में रहने दो। सिंपल, दिस वे विल गेट द मिनिमम फॉर ईच एलिमेंट, राइट। सो मिन अपडेट अपडेट किए, यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। नाउ आइट्रेशन 2, आई मूव होता है 1 पे, यहाँ पे आया 3, ये 1 है। प्री मैक्स में क्या है, 5 है। मिन बिफोर क्या था, 6। So we will check is our pre-max is greater than our min, which is nothing but 6. So no, it is not. मतलब कि हमारा 1 जो है इस 1 के राइट में कोई भी बड़ा एलिमेंट नहीं है, मतलब सॉरी, राइट में कोई भी छोटा एलिमेंट नहीं है। If there is no element smaller on the right hand side, what we'll do, we'll just update the pre-max, and pre-max is nothing but 5, and we update our min। min में 6 था, array of I is equals to 1 है, so we'll update 1। now we'll move to second, here we have 4, and pre-max I is nothing but 5 only। now the min before was 1। now we'll compare our pre-max with our min। so our pre-max is nothing but 5, is greater than min or not? Yes, 5 is greater than min. Our At our current index, which is 4, we have a bigger element on the left hand side, which is 5, and a smaller element on the right hand side, which is 1, right? So in this case, what we will do, we'll just put our answer I plus 1. Now the question is, why we put I plus 1? We put I plus 1 because when we were on 3, we have already calculated the maximum value for this one, right? We have already calculated the maximum for this one, or for this index, if we would say. So for filling this particular index, if we move to the smaller element, which is like on the right hand side, once we move on the right hand side, for this index we have already found that which is the bigger or which is the larger element exist in the whole array on the left hand side, that is 5, right? So simply we just put the same number here for the answer as well.
Understood? I am saying for this index 3, we were moving from the n minus 1 part. So for this index 3, we have already found the larger element, which was 5. Correct? So when we are on 4, we tried to look for the smaller element on the right hand side. We found that 1 is the smaller element on right hand side. But for 1, we have already tried to look for the larger element, right? Which was 5. So if 5 is already an answer for 1, we are moving 4 to 1 and then we are moving to 5. So the same answer which is for 1 will have the same answer for 4 as well. Correct. So we updated 5 here. Answer I plus 1. And we updated our min, which is nothing but 1 only, because array of I is equals to 4 and min is equals to 1. So mat.min will be 1. So we updated 1 here. Simple. अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, यहाँ पे 4 के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने आंसर I plus 1 क्यों फिल करा, which is nothing but 5. ऐसे समझो कि अभी हमारे पास करंट एलिमेंट 4 है, ठीक है। जब हम आंसर फाइंड आउट कर रहे थे, हमने अपने एरे का आइट्रेशन n-1 से शुरू किया था। हमने 6 के लिए देखा कि 6 के लिए मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 6 ही था, हमने 6 अपडेट कर दिया। हमने 1 के लिए देखा कि 1 के लिए मैक्सिमम एलिमेंट क्या था, 5 था, हमने 5 अपडेट कर दिया था। अब हम 4 पे आ रहे हैं, राइट। जब हम 4 पे आ रहे हैं तो हम 4 के लिए जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था, जो स्मॉलर एलिमेंट था राइट हैंड साइड पे, वो 1 था। करेक्ट। और 1 के लिए हमने ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, विच इज 5। सो 4 कहां तक जा पाएगा, 4 जाएगा पहले 1 पे, फिर 1 से जाएगा 5 पे। तो अल्टीमेटली 4 अपने मैक्सिमम वैल्यू पे तो पहुंच ही रहा है, राइट। हमने 1 के लिए ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लिया है, जो कि 5 था, और उसको आंसर में डाल भी दिया है, हमारे आंसर एरे में डाल भी दिया है। और इवन आंसर एरे भी जो है, आंसर का जो एरे है वो भी पीछे से फिल हो रहा है। So here it was 5, then it came with very firstly it was 6 here, then we updated for 5. अब जब हम 4 के लिए आए हैं ढूंढने के लिए जो सबसे बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमने क्या कंपेयर करा, हमने कंपेयर करा कि हमारा जो मैक्स है, हमारा जो प्री मैक्स है, प्री मैक्स ऑलरेडी 5 है, मतलब कि हमारे 4 के लिए 4 से बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है 5। नाउ वी हैव टू लुक फॉर अ प्रॉपर वे टू रीच टू द 5। तो प्रॉपर वे क्या है, पहले स्मॉलर पे जाओ देन लार्जर पे जाओ। तो जब हम स्मॉलर पे जा रहे हैं जो कि आगे है, तो उसके लिए तो हम ऑलरेडी लार्जर फाइंड कर चुके हैं विच इज 5। तो इसके लिए भी सेम ही लार्जर होगा, राइट। So that is the reason we are updating with answer I plus 1, because answer I plus 1 is already filled for the smaller elements, because 4 के लिए smaller element exist करता है right hand side पे। जब वो आगे जाएगा तो आगे से जो पीछे वाला elements होगा वो तो सेम ही होंगे सबके लिए, correct। So this is why we updated it to
answer I plus 1. Now when we move to I is equals to 2, this is done. Now I is equals to 1. Here we have 2. Now pre-max is 5 itself and min is equals to 1. Now 5 is greater than 1. Yes, it is. So same यहाँ पे भी क्या होगा? We'll update with 5. Answer I plus 1. 4 के लिए भी हमारे पास 5 आंसर आया. So 2 के लिए भी 5 आएगा. Same minimum. Now we move here. अब हमारे पास 5 है. Oh sorry, 0 है. Element is 5. इसका max भी 5 है. Now min before was 1. So we check 5 is greater than 1. Yes, 5 is greater than 1. तो ये satisfy हुआ तो हमने क्या किया? अरे आंसर का जो I plus 1 था वही यहाँ पे भी आएगा, which is 5. मैंने अपडेट कर दिया. तो हमारा आंसर का जो एरे है वो क्या हुआ? 5 5 5 5 6. राइट, ये हमारा आंसर हुआ. So this is the way we will be approaching this problem. So we'll create one pre-max array from left because all the larger element exist on the left hand side. Iterate from right by making min update answer. Simple. इसका code, this is, we already know this is a medium level problem, right? But इसका कोड इतना स्मॉल सा है. अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं. लेट्स सी. तो इसमें हम एक लूप चला रहे हैं बेसिकली n तक और दूसरा लूप n से 0 तक चल रहा है. तो ये भी होगा आपका O of n एंड देन ये भी होगा आपका O of n. सो O of n plus n इज नथिंग बट O of n. ये हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम बेसिकली एक आंसर बना रहे हैं O of n का, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O of n. आंसर भी बना रहे हैं एंड प्री मैक्स भी बनाया है n तक. सो या स्पेस ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो O of n. इसके और भी ऑप्टिमाइज्ड वे हैं, एग्जिस्ट करते हैं बेशक, बट फॉर नाउ दिस इज द मोस्ट easy approach I can think of or we can think of, and it is easy as well. इसका सिंपल इंट्यूशन यही है कि अगर हम बड़े एलिमेंट पे तभी जा सकते हैं जब हमारे पास आगे कोई छोटा एलिमेंट है और उस छोटे एलिमेंट से फिर हम बड़े बड़े एलिमेंट पे शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट बड़े एलिमेंट पे आगे शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि रूल है, राइट? सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर looking to this video. Thank you so much for joining this session. Thank you all. Please do subscribe
comment if any doubts you have. I'll try to clear the doubts. And as I said, even I am learning. So thank you.